You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in my heart if you want to. Hi and welcome to my channel. Today I'm going to create a makeup look that effortlessly enhances your features and that will give you a glamorous yet natural appearance. So this look is perfect for various occasions, from daytime event or for a special event also. So let's get started. सबसे पहले मैंने मेरी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है। क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र, स्क्रब, इन सबको मैंने पहले ही यूज़ किया है, तो आप भी इस स्टेप को मत स्किप करना, क्योंकि ये स्टेप्स मेकअप के पहले यूज़ करने से हमारा बेस अच्छा दिखता है। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का टोनर, जो कि स्किन को हाइड्रेटेड रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का प्राइमर, जो कि आपके मेकअप को स्मूथ और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। यूज़ अ लाइट वेटेड प्राइमर टू मिनिमाइज पोर्स, इवन आउट योर स्किन टोन एंड हेल्प योर मेकअप लॉन्ग लास्टिंग। मैंने इस लुक के लिए बहुत ही लाइट बेस रखा है विदाउट यूजिंग एनी फाउंडेशन, as wearing foundation or skin as on everyday basis can make your skin dull and affect कर सकता है। and if you want to use foundation, please use light weighted foundation। उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्वीज़ करूँगी a small amount of BB and CC cream onto the back of my hand, and using your fingers start applying the cream onto your face and also your neck। Make sure to blend the cream evenly एंड बिफोर ब्लेंडिंग मैं यहाँ पर ब्लेंडर के ऊपर थोड़ा सा मेकअप स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा, ताकि ये इवनली ब्लेंड हो। एंड इफ़ नीडेड अप्लाई एन एडिशनल लेयर ऑफ क्रीम टू द एरियाज दैट रिक्वायर मोर कवरेज। एनीवेज आपको ज़्यादा क्रीम लगाने से बचना चाहिए, एज इट कैन रिजल्ट इन heavy and cakey look. Make sure to blend the cream evenly, ensuring that there is no harsh line or uneven patches. Take your time and build the coverage gradually rather than applying too much product. So next is concealer, the magical portion that promises to erase all your flaws. Well, let me tell you a secret, it doesn't. But let's give it a shot anyway. Dab a little bit of concealer under your eyes and on any blemishes you want to hide. Concealer हमेशा अपने स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट शेड का चूज़ करना और इसको फिंगर्स या फिर ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड करना। और कंसीलर ज़्यादा यूज़ मत करना, थोड़ा थोड़ा करके लगाना। और याद रखना कि मेकअप यूज़ करते टाइम बैलेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोडक्ट्स जितना कम उतना ही ज़्यादा अच्छा बेस लगता है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। इसके बाद मैं आईब्रो फिल करूँगी। मैं यहाँ पर आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो आईब्रो पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आप अगर बिगिनर हो तो आप पेंसिल ही यूज़ करो। Start by defining the shape and then fill it using light strokes. Then comb through your brows with a spoolie brush to blend the color and create a natural look. Eyebrows आपके चेहरे का फ्रेम है, इसलिए उन्हें शेप देना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए आप नेचुरली उसको डिफ़ाइन करो। नेक्स्ट स्टेप है कंटूर। Contouring is a makeup technique which involves using light and dark shade to enhance or reshape your facial features. Here I am using Swiss Beauty concealer palette, but here even we have a darker shade than my skin tone, so I am using this as a contour. While you all will be wondering why I am making such faces, so I'll tell you, मेरा concealer palette टूट गया था and I don't know how it got broke. तो मैंने फिर से उसको फिक्स किया एंड हियर आई एम। अप्लाई द कॉन्टोर शेड डायरेक्टली बीनीथ योर चीक बोन, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ईयर्स एंड ब्लेंडिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ योर cheeks. If you have a square face shape, then focus on softening the angles by applying the contour shade along with the jawline, and then blend out the contour shade well using a makeup brush, or you can also use blending sponge to ensure a seamless transition with your foundation or BB cream or CC cream. To slim the appearance of your nose, apply the contour shade to the sides of the bridge of your nose. Start from the inner corner of your eyebrows and blend towards the
tip of your nose. If you want to shorten a nose, apply the contour shade to the tip of your nose and blend downwards. Now it's time to set your base using a translucent or color matching powder. Apply it lightly using a fluffy brush. Focus on the T-zone and also areas prone to oiliness. Here I am using a beauty blender. If you have a oily skin and want to extend the life of your makeup, want to make your makeup long lasting, lightly dust a translucent setting powder all over your face, or else you can also use setting spray to lock your makeup in the place and provide a fresh finish. Now it's time for eye makeup. Apply a neutral eyeshadow shade all over your eyelids, starting from the lash line and blending upwards towards the crease. Start the outer corner of your eye and blend the eyeshadow inward using a fluffy blending brush. These steps add dimension to your eyes. Now use a medium toned eyeshadow shade which will define your crease and also give depth to your eyes. This will help your eyeshadow colors appear more vibrant and stay in place. Now using the same brush and same color, apply the shade in your lower lashes and blend it evenly using same blending brush. This step will make your eyes look bigger. Now take a darker eyeshadow shade, apply it to your outer corner of your eyelid, forming a V shape. Blend the color well to create a seamless gradient with the crease shade. Now clean up any fallout or excess powder under the eyes. Now choose a shimmery or lighter shade and apply it to the center of your eyelid. This will add brightness and make your eyes pop. Use a clean brush and blend the edges with the crease and outer corner shade. Now it's time to line your eyes. For added definition, apply eyeliner along your upper lash line. You can use a pencil, gel or liquid depending on your preferences. अब मैं यूज़ करूँगी मस्करा, और अगर इस पॉइंट पे अगर आप चाहते हो तो आप फेक लैशेस भी लगा सकते हो या फिर अपने लैशेस को कर्ल कर सकते हो. Wiggle the wand from the roots to the tip for a maximum volume and length. Then I am going to use blush to the apples of my cheeks and blend it gently towards my temples. शेड वही चूज करना जो आपके स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट करे. I have used highlighter only on the bridge of my nose, and this will give you a natural soft glow. Now it's turn to line your lips with a lip liner that matches your natural lip color or shade of your lipstick you are going to use. Then apply your favorite lip shade starting from the center and working your way towards the corners of your lips. Here I am using Sugar and Maybelline lip shades. First lipstick I used is Sugar and the shade is 08 Wine and Shine, and the other one is Maybelline New York Sensational Liquid Matte in the shade Nude Nuance. If required, you can repeat the lipstick application for more intense color and just pat the lips together and here you are done. And जो भी products मैंने use किया है मैं उसको description में दे दूँगी, उसका link share कर दूँगी. You can go and check out from there. And there you have it. This look effortlessly combines glamour and simplicity. With these steps you can achieve a polished appearance suitable for various occasions. ये ज़रूर याद रखना कि makeup is the key to enhance your natural beauty and have fun while experimenting with different products and shades. See you in my another glamorous makeup look. Till then, take care of yourself and subscribe to my channel. And thank you so much for watching, and please like, share and comment ज़रूर करना. And here I have completed my look using bindi and wearing this blue color kurta with earrings. So please बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा in the comment section below, and love you all.